Okay, students, good morning. And as you can see, I'm taking class from where? I'm taking from where? I'm right now standing in your school. Yes, Doug, I am standing in your school, in a classroom. You know? You all are enjoying the warmth of the blankets. You are keeping yourself in blankets, and we are here in your school. You know? That's okay. So as I told you that today we will do the worksheets of conditionals. So we will do that. So first let me share your screen and with the book. And I think we have done worksheet number 3 in last class. Last class में हम लोगों ने worksheet number 3 कर लिया था probably. No, probably exactly we have done. So let me first share my screen first. I think today we have to start worksheet number 4. Am I correct? Rudran, no, Rudransh will say, ma'am, this not. Okay. Daksh, just unmute yourself and tell me whether I have to start worksheet number 4 or Yes, ma'am. Yes, ma'am. So have you seen the video which I have posted? Have you seen the video in which I have explained you about the कंडीशनल्स के बारे में एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो भेजा था तुम लोगों को, तो आप लोगों ने वो देखा है? कितने लोगों ने देखा है? हैंड रेस करो, तो स्क्रीन पे हैंड रेस करो। कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा था? राधे श्रवण ने देखा था, सान्या, स्वस्ति, दक्ष, आनंद, अनन्या, हर्षित, राज, काम्या सिंह, रुपेश। Okay, that means most of the students have seen. That's okay. That's so sweet of you. Does this that video helped you? उस वीडियो को देखने के बाद कुछ समझ में आया? अनन्या? Yes, ma'am. समझ में आया। समझ में क्या आया अनन्या? That conditionals are a sentence in which now our results or the action depends on a particular condition. यही था ना? है ना? On a condition. और फिर मैं तुम लोगों को बताया there are 4 types of conditional sentences, है ना? 0 conditional, first conditional, second conditionals and third conditionals. किसको फर्स्ट बोलते हैं, किसको 0 बोलते हैं, क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है ना? तो बार बार उस वीडियो को देखना बच्चों, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ लुक एट वर्कशीट नंबर 4. व्हाट वी हैव टू डू हियर? Worksheet number 4, we have to again write the sum of the situations in conditionals. Imagine a fairy had just appeared before you. She granted you 5 wishes. Using the pattern I wish, write your wishes as shown in the example like this. I wish I were good at maths. Okay. I wish I were rich. So like that we will write the see whatever I am writing, it's not necessary that you should write the same. You can have your own wishes, है ना? आप अपने भी wish लिख सकते हैं. I wish I were a prime minister, है ना? I wish I were a beauty queen or whatever, है ना? आप that's yours choice. Not necessary कि आप वही लिखो जो मैं लिख रही हूँ. ठीक है, आप खुद से भी लिख सकते हो. एक मिनट दे दो मुझे, मैं निकाल दूं थोड़ा बुक इसमें, है ना?
कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे बच्चों, है ना। आप जैसे सपोज इसमें आप लिख सकते हो आई विश आई वेयर अ डॉक्टर, है ना, या फिर आई विश आई वेयर अ बर्ड। सो राइट डाउन, जो अगर आप मेरा ही लिखना चाहते हो तो मेरा ही लिखो आप। सपोज, ठीक है, मैं लिख रही हूँ, आप लिखो। इफ यू वांट टू फॉलो दैट, आप वही लिखो। आई विश आई वेयर अ बर्ड, ठीक है। आई विश आई वेयर अ डॉक्टर, I wish I were a doctor. Now next number 3, I wish I were an engineer. I wish I were an engineer. I wish I were a teacher. I'm repeating it again. It's not necessary that you should write this one. You should have your own wishes. आप खुद का भी wish लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। A teacher. Next, I wish I were a pilot. ठीक है, हो गया सबका। नाउ लेट्स मूव। कितने लोग लिख रहे हो? जो लोग वीडियो बंद करके रखोगे उनका तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। रुपेश लिख लिया? रुपेश, हैव यू रिटन? The students are writing. Satvik, written? Okay. Abhishek Shrivastava, have you written? सिर हिला के बताओ। Very good. So I think everyone has written. It's not so much tough. Now you have to write your wishes. 4D के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे अपना वीडियो बंद करके दो बच्चों। That's not cool. Now let's move to the next one. Now write down one a reason for each of the above wishes. है ना, जो हमने ऊपर लिखा है क्यों लिखा है। जैसे मैंने पहले लिखा था इफ आई विश आई वेयर अ बर्ड, मैंने यही लिखा था। तो मैं जैसे अभी ये लिखना है तो कैसे लिखेंगे अभी हम? चलो इसको लिखते हैं हम लोग। सपोज मेरा पहला विश था आई विश आई वेयर अ बर्ड, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, if I were a bird, write down, if I were a bird, if I were a bird, comma, I would try, I would try to touch the sky. तो जस्ट लाइन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते मुझे। देखो यहाँ थोड़ा सा लाइन एडजस्टमेंट करने में थोड़ा दिक्कत हुआ है मुझे, तो आप इसको एक साथ लिखना, टच द स्काई, आई वुड ट्राई टू टच द स्काई। नाउ नेक्स्ट विश था मेरा टू बी अ डॉक्टर, है ना। आई विश आई वेर अ डॉक्टर, व्हाई आई यूज्ड टू विश लाइक दिस, उसका भी रीजन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। क्यों हम लोगों को डॉक्टर बनना होता है? बिकॉज वी वांट टू ट्रीट द पुअर पीपल, है ना।
तो इसका लिखो, if I were, write down, if I were, if I were a doctor, if I were a doctor, I would treat, I would treat the patients, I would treat the patients. फुल स्टॉप देते जाएंगे बच्चों, फुल स्टॉप नहीं छोड़ेंगे, है ना. If I were a doctor, I would treat the patient. Now in that note, second one, the third wish is to be an engineer. So again we will write the reason of why I want to become an engineer like this. If I were, just have a space, Babu, space. If I were an engineer, comma, I would work, yeah, I would build bridges, है ना, buildings, anything. I would work, कुछ भी लिख सकते हो, it's your wish. I would work in company. I would work in companies, big companies. Yeah, I would build bridges and arcs, railway tracks, anything. Now, the next, what was our next wish? Our next wish was to become a teacher. So write down, if I were a teacher, if I were a teacher, comma, I would teach poor children, है ना? I would teach poor children. या फिर ना unprivileged children, कुछ भी. And the last wish, what was the last wish? The last wish was to become a pilot. So write down, if I were, कहीं कहीं पे स्पेस में भूल जा रही हूँ, तो आप लोग स्पेस जरूर लेंगे, ठीक है. If I were a पायलट होगे तो क्या करोगे? रिक्शा चलाओगे? नहीं, क्या चलाओगे? योर हेलीकॉप्टर्स या फिर एरोप्लेन्स, है ना. If I were a pilot, what will I do? I would fly my own aeroplane या फिर helicopter, aeroplane. Full stop.
हो गया? सबका हो गया? अंश कृष्णन सिंह, यू आर नॉट राइटिंग? Now comes worksheet number 5. I'm making it clear. जिनका नहीं हुआ वो वीडियो से देख के लिखना. Look at the picture given below. It is the picture of a lonely jungle. You and your friend are lost in it. Imagine, what would you do if you saw a girl in a ditch, a lion appeared before you, you saw a wounded man lying on the ground, a bear appeared, a ducat surrounded you, you met your class teacher, if, है ना, इतने situations में आप क्या करोगे, है ना? Now we have to write one by one. If I saw a girl in a ditch, ditch कहते हैं दलदल में, है ना, कहीं पे फंसा हुआ है कोई, तो आप क्या करोगे? मार्शी लैंड होता है ना, कभी देखा है? टीवी वगैरह में दिखता है ना? डिच ना देखा है आपने? जहां एक बार फंस गया ना, जो एक्टर आपने फिल्मों में देखा होगा कहीं कहीं, जहां एक्टर एक बार फंस गया तो वो फंसा ही जा रहा है, अंदर ही धंसता जा रहा है ना. तो अगर किसी जंगल में आप किसी को ऐसे देखोगे तो आप क्या वहां से भाग जाओगे? नहीं, आप नहीं भागोगे. आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू हेल्प, है ना? सो इफ आई सॉ अ गर्ल इन अ डिच, आई वुड हेल्प हर, है ना? आई वुड हेल्प हर. तो जल्दी जल्दी लिखो बच्चों. टू कम आउट. आई वुड हेल्प हर टू कम आउट. तो और धक्का देके नीचे गिराओगे? कौन नीचे गिराएगा? सात्विक नीचे अंदर ढकेल देगा. जाओ अंदर जाओ, बाहर नहीं आना, है ना? चलो नेक्स्ट. इफ अ लायन अपीयर बिफोर यू, है ना, इफ अ लायन अपीयर्ड बिफोर मी, आई वुड क्या करेंगे? दोस्ती करने जाएंगे, है ना? हैंडशेक. कौन कौन हैंडशेक करेगा? पलक करेगी, रुद्रांश करेगा, आराध्या करेगी. ये लोग हैंडशेक करेगा. गुड आफ्टरनून टाइगर, हाउ आर यू, है ना? या गुड आफ्टरनून लायन. अच्छा, किसी ने हैंड भी किया है? पीहू, पीहू करेगी ना, हैंड शेक करेगी. क्या बोलोगे? हाउ आर यू एंजॉयिंग द फॉरेस्ट, हैव यू वांट टू ईट मी, डू यू वांट टू ईट मी? पीहू बोलेगी ना, ना? डू यू वांट टू ईट मी लायन? लायन बोलेगा यस. नो, नोबडी इज गोइंग टू डू दैट. सो राइट डाउन. क्या करेंगे? हम पहले ही भाग जाएंगे, या तो वहीं पे लुढ़क जाएंगे, है ना, है ना, या तो अनकॉन्शियस जाएंगे, या डर के मारे मम्मा मम्मा चिल्लाना शुरू. और उसके बाद या कहीं आप कोई एक ऐसा सेफ जगह देखोगे, और सबसे सेफ जगह क्या दिखाई देगा हम लोग को? जंगल में, जहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है. ऑब्वियसली हमें ये पता है कि शायद हम अंदाजा लगाएंगे कि पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगा शेर, एंड वी वुड ट्राई टू क्लाइंब ऑन अ ट्री, है ना? है ना आर्यन? पेड़ पे चढ़ोगे ना? शेर पे चढ़ोगे? आर्यन सिन्हा, पेड़ पे चढ़ोगे कि शेर पे चढ़ोगे? किस पे चढ़ोगे? अपने आप को बचाने के लिए शेर के ऊपर ही बैठ जाना है, ठीक है? चलो लिखो, यहाँ लिखो. आई वुड क्लाइम, I would climb up. I would climb the tree. ठीक है? Full stop. Now, if I saw a wounded man lying on the ground, I would give him the first aid. Whatever we can do as in first aid में हम जो भी उसको दे सकते हैं, हम उसको वही देंगे, है ना? So write down, give him the first
aid. Give him the first aid. If a beard appeared, I would write down, lay down, क्योंकि पता है जो बियर्स होते हैं ना, वो मरे हुए पे हमला नहीं करता है ना. दे इट विल नॉट अटैक ऑन एनी डेड एनिमल और डेड लिविंग बीइंग. उसका ये एक नेचर है. दिस इज द नेचर ऑफ अ बियर. तो अगर आप चुपचाप लेटे रह जाओ सांस रोक के, तो बियर आपको कुछ भी नहीं करेगा, चला जाएगा वहां से. ठीक है. सो यू आर गोइंग टू ले डाउन, lay down and stop breathing, full stop breathing. Now next, if decades surrounded me, है ना, अगर चारों तरफ डाकू आ जाए तो क्या करोगे? रोने लगोगे? नहीं, को पता है कि रोने से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे? हाथ पैर मारेंगे. आई वुड फेस, है ना, जो भी होगा थोड़ा हिम्मत से, ब्रेवली फेस द सिचुएशन, फेस द situation boldly. ठीक है. I would face the situation boldly. हो गया सबका? एक और है, इसको लिख लो. क्या है? इफ आई मेट माई क्लास टीचर. जंगल में जा रहे हो और क्लास टीचर मिल जाए, हर्षवर्धन सर मिल जाए, तो क्या करोगे? आप तो जंगल में खो गए हो और अचानक से आपको सर दिख गए, तो आप सबसे पहले तो आपके दांत बाहर आएंगे. वो माय गॉड, माय क्लास टीचर इज हियर, ही कैन हेल्प मी, है ना. दांत दिखाए, सर सर प्लीज हेल्प मी, है ना. I forgot the way, so you are going to ask for help. So write down. पहले इसको मिटा दो. सबका हो गया? याद हो गया? सबका हो गया बच्चों? अर्पिता, अनमोल, हो गया? अरे थम्स अप दे रहा है. अनुष्का, अन्विष्का, वैभव, हो गया? वेरी गुड. चलो, so just move on. आगे चलते हैं हम लोग. जो स्लो राइटर्स हो बच्चों, अगर आपका छूट रहा है ना, तो आप ये कर सकते हो कि आप वीडियोस तो यूट्यूब पे जाते हैं ना, आप वहां से खोलो और वहां से लिख लो. इफ आई मेट माई क्लास टीचर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू आस्क फॉर हेल्प. सो यहाँ लिखेंगे हम लोग, I would ask. आपकी क्लास टीचर मेल है, तो यूज him. Ask him for help. Full stop. Now do it yourself. Read the incomplete sentences given below and complete them in any suitable way. The first one has been done as an example. If ice is kept at normal temperature, it melts. If there is light, there is also, अगर बिजली चमकती है तो बिजली के साथ साथ क्या होता है? थंडरिंग भी होती है ना, बादल गरजते भी हैं. तो यहाँ लिखो आप थंडरिंग. There also is thundering. If salt is added to water, what happens? It dissolves. It dissolves.
If a stone is thrown upward, it comes down. It comes down. It comes down. पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वहीं वो हवा पतंग की तरह उड़ेगा नहीं. आप जितनी रफ्तार से उसको ऊपर फेंकोगे, it will come down. If you practice daily, you may become perfect. And the last is, if you turn off the tap, the water, नल को बंद करोगे तो क्या हो जाएगा? पानी बाहर आना बंद, है ना? Stop flowing. Stops flowing. सबका यहाँ तक हो गया? यहाँ तक सबका हो गया? मेरे 4D के बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं, सब अपना वीडियो ऑन करके बैठते हैं. 4D में मैक्सिमम बंद करके बैठते हैं. हाँ, कुछ हैं जो जरूर ऑन करके बैठते हैं. Some students are there, of course there are some students. Okay, चलो नेक्स्ट करें हम लोग. If you turn on the tap, the water stops flowing. Stops flowing. देखो, stops. Stops. If you turn on the tap, the water stops flowing. Done. Now imagine you were in the following situation. What would you do in each of these situations? Use imagination to complete these sentences in an interesting way. एक ना इंटरेस्टिंग वे में आपको करना है ना? जैसे कौन बनेगा करोड़पति, है ना? इफ आई वेयर अ मिलेनियर, अगर मैं करोड़पति हूंगा तो मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? सारे पैसे मुझे दे दोगे, है ना? दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दोगे तो नहीं पढ़ाऊंगी. पैसे दोगे? कितने लोग मुझे देगा? हाथ उठाओ तो. अगर आप लोग करोड़पति बन गए तो पूरा पैसा तो नहीं, कुछ दोगे कि नहीं दोगे? कोई नहीं देगा. अच्छा, मुझे मत देना, बट कुछ ऐसे लोगों को जरूर देना. अच्छा, नो, आलोक देगा, रुपेश भी देगा. वेरी गुड, थैंक यू सो मच. थैंक यू आलोक, सो स्वीट ऑफ यू. पीहू भी मुझे देगी, अनन्या भी मुझे देगी. ओह माय गॉड, कितना मेरे पास पैसा पैसा. Lots of money I'm going to earn from you guys. Okay, just याद रखना, जब सब बड़े हो जाओगे और बड़े बड़े पोस्ट पे रहोगे, अगर कुछ कभी मुझे देखोगे तो मुझे भूलना मत, है ना? ये हमारी डील है. You made a deal with me. Okay, so now what you are going to do? If I were a millionaire, अगर आप मिलेनियर बन गए तो आप क्या करोगे? You are not going to give Supriya ma'am, but for sure you should help some of the needy peoples, है ना? जिनको उसकी जरूरत मुझसे कहीं ज्यादा है ना? सो राइट डाउन, ये याद रखना, ये हमारा ह्यूमैनिटी वाला नेचर. अच्छा, कहीं भी है ना बच्चों, ये याद रखना, एग्जाम्स वगैरह में याद रखो इस बात को बहुत अच्छे से. इन एनी एग्जाम्स कभी भी निगेटिव रिस्पॉन्सेस को कभी मत करना, है ना? कभी भी नहीं. जब भी आप लिखो तो पॉजिटिव अप्लाई करो, कुछ पॉजिटिव वाइब्स वाले रिस्पॉन्सेस को अटेम्प्ट करना. जैसे अब मान लो कहता है कि इफ आई वेयर अ मिलेनियर, तो आप कुछ पॉजिटिव अप्रोच, यानी पॉजिटिव अप्रोच इन द सेंस कि किसी जरूरतमंद को देंगे, पुअर पीपल को देंगे, है ना? आई नो यू शुड बी ऑनेस्ट, जो आपके मन में हो करो, लेकिन एग्जामिनेशंस में ट्राई टू राइट डाउन द पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस. सो हियर वी विल राइट I, not T, it's I. I would
help. I would help the needy. I would help the needy people या फिर poor people. That's up to you, है ना? आप पे है dependent. I would help the needy people. Full stop. If I went to live in another country, अगर मैं किसी दूसरे देश में चला जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा वहाँ? I would miss my family of course, है ना? फैमिली बहुत याद आएगी, पेरेंट्स की बहुत याद आएगी, है ना? अपने नियर एंड डियर वंस की जरूर याद आएगी. So definitely we are going to miss our family and the traditions. So write down, I would miss my family. I would miss my family. Full stop. I would miss my family. उसके बाद है if I became invisible. अगर मैं गायब हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं तो तहलका मचा दूंगी, है ना? मैं गायब हो जाऊंगी, सबके घर पहुंच जाऊंगी देखने के लिए कौन क्या क्या कर रहा है, what everyone is doing, है ना? सबके घर से, है ना? बहुत सारे बच्चे आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम लोग क्या करेंगे, गायब हो जाएंगे तो सबसे पहले कौन क्या करेगा? लेट्स सी. इफ यू बिकेम इनविजिबल, अनमोल अनम्यूट योरसेल्फ. आप क्या करोगे? मैं चिल्लाऊंगा. बाप रे, वो तो तुम ऐसे भी चिल्ला रहे हो. हाँ, if you become invisible you will shout a lot. Vaibhav is smiling. What happened, Vaibhav? आप बताओ, what you are going to do when you became invisible? मैम मैं जब इनविजिबल हो जाऊंगा तो मैं कहीं घूमने जाऊंगा. ऐसे नहीं जाते, ऐसे नहीं जाते. लॉकडाउन में फंस गए है ना? मैम जाते हैं. हाँ, लेकिन अभी लॉकडाउन में बंद हो गए हैं घर में, है ना? दिस जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड. ओके, और किसको क्या करना है? आराध्य, श्रवण, आप बताओ. अभी नहीं बोलेगा. आराध्य, श्रवण स्माइल कर रहे हैं. अच्छा, यशस्वी बताएगा. यशस्वी, what will do? What you are going to do if you became invisible for some time? Ma'am, I will eat all candy kept in my home. All sandwiches, eating. अच्छा, सिर्फ सैंडविच खाओगे? Okay, so then everyone has its own wish. So just write down, if I become invisible, I would eat something, I would do something, I would fight with someone. और अभी किसने कहा कि मैं घूमने जाऊंगा, तो आप जो भी चाहते हो यहाँ पे लिखो. बस स्टार्ट आप करोगे I would से. ठीक है? Write down yourself. कंडीशन जो भी है, जब हम इसको सेकंड करते, देखो ये जो है ना बच्चों, ये मेरा सेकंड कंडीशनल है, जहां पे दोनों पार्ट मेरे इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों भी पास्ट में है ना? तो दिस इज माय सेकंड कंडीशन. लेट्स मूव अहेड नाउ. आगे चले. Now next condition is that if my friend gets into trouble, अगर मेरा कोई दोस्त मुसीबत में है तो सिद्धांत क्या करेगा? उसके ऊपर हंसेगा? मैम उसकी हेल्प करूंगा. तो write down, I would try to help him. If my friend gets into trouble, write down. Should I write it? मैं लिख दूं? Write down. See, pattern will be same,
है ना, कुछ चेंज नहीं है यहाँ जिसके लिए इतना वरीड होना है, सेम पैटर्न है, बस आप अपना विश आप लिखोगे, आप जो चाहते हो कि मैं वो करूं वो करोगे, तो यहाँ भी वही लिखेंगे हम लोग, आई वुड ट्राई टू हेल्प। इन योर स्टेटमेंट ऑलवेज विथ फुल स्टॉप लगाना कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। इफ आई लूज ऑल माई मनी, है ना, देयर मस्ट सपोज one day you got to know that whatever you are having, है ना, that all you have lost, तो क्या हो जाएगा, सदमा लग जाएगा सबको, है ना, ऑब्वियसली लग जाएगा। क्या करोगे, रो रो रोना शुरू करोगे। संभव लक्ष्य, अनम्यूट करो बेटा। मैम मैं नौकरी ज्वाइन करूंगा। नौकरी ज्वाइन करने के लिए तो तुम बहुत छोटे हो अभी। आपको सपोज एक कंडीशन में, आपको हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन जानो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स आए थे, जब वो जाने लगे आपको 500 रुपीज दे दिया, है ना, एंड यू केप्ट इट वेरी वेरी कॉन्शियसली, बहुत ध्यान से आपने उसको रखा, है ना। आफ्टर फ्यू डेज यू गॉट टू नो कि जहां आपने वो 500 रुपीज रखे थे वहां से वो 500 चले गए, तो आप क्या करोगे? अनन्या आप बताओ, जल्दी बोलो बेटा, खत्म करूंगी ये क्लास। अनन्या, व्हाट डू यू डू?